Assalamu alaikum. This is Kamal Masroor from CXO Global Forum, and we've been waiting for a great webinar, we must say. There is a special host we have today, Zain Jeewanjee, been a good friend, a good support from Silicon Valley directly. He been into Pakistan many times. हमने इनको host भी किया. इन्होंने लाहौर में एक बहुत जबरदस्त हमारे साथ event भी किया. He actually is the CEO and founder of Insure 123. So he's roaming around this technological business and insurance business all around, and he's helping us a lot. He's very kind person. He's a very supportive person. He's always into giving opportunity to the youngsters in Pakistan. He's always keen with lots of energy. So thank you so much, Zain, for joining today. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam. कैसे हैं आप? Excellent जी. So thank you so much for joining us. आपने आज का एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक रखा कि Silicon Valley style पे जो है making your business from dream to reality. We actually certainly आपसे मेरा एक लाहौर में तो एक हमारा सेशन हुआ था. I think a short brief about who is Zain Jeewanjee, and then we'll start from the topic discussion पे हम start कर लेंगे. जी. Who is Zain Jeewanjee? Zain Jeewanjee आज सुबह तो is a Paul McCartney fan. मैं उसको stalk कर रहा हूँ. Who is the my life actually revolves around music. It's very funny. उनका Paul McCartney का Beatles का एक गाना है Let It Be. वो that really is the prime basis of everything I do in life. Just let it be. तो उसको मैं चेस कर रहा हूँ. कल मैं ऑर्लैंडो में था उसके साथ watching one of his concerts, and I'm bringing the topic around what it means. I was in Miami the day before that. I was in Greensboro before that, and before that in Oakland, California, and then Seattle. So I've chased him around on or our concert. I try and take first 3 tickets, and then I take a friend or somebody, a good friend of mine. And the reason I bring that up is Paul McCartney is 69 years old. He comes on stage and he performs for 3 hours, doesn't stop for a minute. Wow. He's a gentleman who I heard him first in 1963. So, and we're in 2022. And so imagine he doesn't have to do it for money. Okay. Right? He doesn't have to do it with money. Yeah. And his energy level is amazing. It's just vibrantly amazing. He's supporting a cause that's called Don't Eat Meat on Mondays. कहते गोश्त बंद कर दो एक दिन. Okay. मैं जब छोटा था ये तो पाकिस्तान में होता था एक दिन बंद. अभी भी होता है पाकिस्तान में बंद गोश्त. अभी भी होता है. 2 दिन होता है, Tuesday and Wednesday, I guess. लेकिन जो अमीर ज़ादे हैं वो फ्रिज में फ्रीजर में रख के वो खा लेते हैं. ऐसे ही होता है. राइट? जो बेचारे गरीब है वो नहीं खाते. तो गरीब जो है उनकी तोन भी फिट होती है, वो फिजिकली भी फिट रहते हैं और इंशाल्लाह ताला जिएंगे भी ज्यादा. मेरे जैसे अमीर लोग मरेंगे पहले क्योंकि हम गोश्त खाएंगे उस दिन छुट्टी वाले दिन. So really business in Silicon Valley is conducted that way. The energy level, the work ethics, everything is at the bar. Okay. Or how do you take your dreams? So मेरे बारे में ये क्या है? Zain Jeewanjee is a fun guy. I'll turn 67 in about 10-12 days. 13 तारीख को मेरी birthday होगी. I'll be 67 years old. 10 years younger than Paul McCartney, and I hope and pray, 13 years younger than him. I hope and pray, inshallah ta'ala, कि मैं भी 79 पर इसी energy में रहूं जो आज मेरी energy है. कि मैं सुबह फजर के वक्त उठूं जिस तरह मैं उठता हूं, and I can be alive and vibrant, my brain revolving at 6-7 o'clock when I'm talking to somebody. If I can do that, my dream is fulfilled. It's not about. So I think Silicon Valley जो ये जगह हम जिसको bubble कहते हैं, San Francisco, San Jose, Santa Clara County, Mountain View, Palo Alto, ये इलाका, अगर आप कभी जो आए हैं इधर जिन्होंने देखा होगा तो you really could look outside the window around the circles. और मैं Houston, Texas में हूँ, I'm in a hotel room.
I came from Orlando yesterday. But if you look around the Silicon Valley, it's a valley, which means it's surrounded by mountains. Within that small circular mountains are Google, Facebook, Cisco, Intel, WhatsApp, every damn thing you can think of that runs the world today is there. And if you go to the Google office at 7 o'clock in the morning and you go at 7 o'clock in the evening, the same cars are parked there. Very nice. So I ask this question to entrepreneurs. Do you open your shutters? Do you open your shutters? Or do your employees open your shutters? So Zain Jeewanjee is about that. I work hard. I play hard. I mean, how many people can go to 6 concerts in 6 cities in 2 weeks chasing the fat? I do it because I can. But then I put the work ethic. That's what I am. बिल्कुल सही कह रहे हैं. So Zain, आपने बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट निकाला. आई थिंक हम लोग पहले इसी पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं कि क्यों हम लोग इतने लेट राइजर्स हैं. आई डोंट नो, आपको मेरी शायद आवाज क्लियर आ रही है. हम लोग लेट राइजर्स हैं एंड यू एब्सोल्युटली राइट. ये इस मसले को एज अ नेशन हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. और आप जिससे भी राब्ता करें, मतलब 11 से पहले तो हार्डली कोई आपको अवेलेबल होता है. एंड देन वी हैव लॉट्स ऑफ हॉलीडेज एज वेल. और फिर उसके ऊपर हमारे फिर कुछ पॉलिटिकल एंड रिलीजन बेस्ड जो है हमारी छुट्टियां बहुत होती हैं. सो एक्यूमुलेटिवली मेरा अंदाजा है कि आउट ऑफ 365 डेज हम वैसे ही तकरीबन को 200 दिन काम करते हैं. और उन 200 डेज में भी हमारी जो है ना वो वर्किंग आवर्स जो है वो बड़ा लेट साइड पे होते हैं. एंड देन फिर हम लोग थोड़ा इसको बड़ा शायद कैजुअल लेते हैं. तो आई थिंक आपकी उससे हम स्टार्ट करते हैं. कितना बड़ा इम्पैक्ट है सर अर्ली उठने का और इसका क्या रिजल्ट है? इज इट ओनली राइजिंग अर्ली और काम शुरू करना है, या फिर मतलब उसका इफेक्ट कितना है सर? रिपल इफेक्ट क्या है उसका? मैं क्योंकि टॉपिक ये है कि स्टार्टिंग बिजनेसेस इन सिलिकॉन वैली, मैं उसी टॉपिक पर रहते हुए आपके उसके अंदर इनकलकेट कर दूंगा मजहब को. अगर आप चाहे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट ब्रिंग इन. तो एक मेरे बड़े अच्छे करीब के दोस्त हैं, greatly respect him. He's also a business partner with me. नईम जमींदार उनका नाम है. बड़े बहुत ही free साहब. I mean just a brilliant personality. उनके साथ में वो एक जगह वो आर्ट ऑफ लिविंग योगा के मेडिटेशन की बात करते हैं. And he's a very sophisticated guy. तो एक दिन उनका वॉशिंगटन में वो सेमिनार कर रहे थे, ओपन का कोई सेमिनार था, तो he came in there. So when he came in there, I started talking with him also. और मैं ऊपर चढ़ा, मैंने कहा कि फजर की नमाज की बात शुरू कर दी. And what Fajr does for you, right? For those who are privileged to be Muslims in this call, and if you're not, if you're a Christian, Hindu, Jew, it doesn't matter. It doesn't matter. When you rise up early, so there are, and I'll be very physically positive. So ये जो जगह है ना आपकी यहाँ पर ankle में आपका जब सूरज पड़ता है उसके ऊपर, तो as nerve cells go up to your brain and tell you to wake up. But Zain Jeewanjee is a lazy guy. He's stayed up all night. वो तो उठते ही नहीं है. तो क्या होता है कि वो nerve cells आती है, नॉक करती है, भाई उठ जाओ, आप नहीं उठते हो. फिर भाई उठ जाओ. तो by the time you get up, you're already tired because your cells have been waking you up because of the sunlight coming through, right? Okay. So this natural phenomena, and there's a thing called in America, in Western countries, in Europe also, Canada, different places, it's called daylight saving time. Yeah. Are you familiar with that? The concept is that you capture sunlight to the maximum. So वो क्या करते हैं, साल में एक दफा adjust करते हैं daylight saving. जब सूरज देरी से शुरू होता है तो वो उसको आगे बढ़ा देते हैं, so they capture more of the sunlight, saving power, energy, vitality, everything. Correct? Exactly. I'll give you a secret. 1500 years ago, that magic was given to all Muslims. They were given automatic daylight saving time without being present there. You get up with the sunrise. And our daylight saving time is more precise. Why? It just daily, monthly,
We don't once a year, hum adjust karenge, science going. And it just geographically all over the world. But because you're Zain Jeewanjee, you're lazy, you had partied all night, you had a kebab tikka house all night, you're not going to do that. You're not going to do that. Which civilized nation in the world, on this planet, would be up at 1 o'clock in the morning eating kebab tikkas on a work day, knowing you have to play a game of winning next morning? I want to give you a story. This is a true story. I was flying to Bangladesh to meet a business meeting. On the flight, at that time, Pakistani PIA flights could not fly over India. So I had to take Emirates. On the Emirates team, in the Emirates plane was the Pakistan cricket team. The legendary of all time cricketers were there, 3 of them. No, the whole team was there, but the legendary people that were friends of mine, Wasim Akram, who at that time had met me a month ago. He was in New York, in Washington, and they were locked outside our hotel because the promoter had not paid hotel fees. I'd go in and paid their fees. This is about 20 years ago. And I paid the fees, so he became friends with me, Wasim Akram, the legend himself. And then there was Mudassir Nazar on that flight, who was the manager, I think. And then there was, who was the manager or coach, and there was Wasim Akram, Waqar Yunus. And so I invited them to dinner. And then we went to dinner. And I talk. When I talk, everybody listens. And we talked and talked. And it was almost 10:30, 11 o'clock. The game was with Bangladesh next morning. Oh. And they stayed there with me. Very nice. That is the problem. What should have happened is Mudassir, the manager, there were 4 of us having their dinner at the hotel, the Sanom in Bangladesh, Dhaka mein kafi badi hotel hai. He would have said, I'm sorry, I've got a game to play 8 o'clock. I'll see you later. Oh, yeah. But the pleasure of listening to Zain, they stayed there. Of course, the pleasure was mine. The honor of, imagine to sit on one dining table with Waqar Yunus, Wasim Akram, and Mudassir Nazar. Single with me for almost like 3.5, 4 hours. That's, and of course, they played just as good. Now listen to me, they played just as good. But imagine if they'd gone to sleep early, rested, because they'd come on a flight, they would have performed a lot better. So in business, in Silicon Valley, it doesn't matter if the team is weak or strong, opposing team. You will still perform at your best of best. And an example would be the Australian team. It doesn't matter who they play with. They could be playing against Zimbabwe. They will put their best act forward. And all the time. So first of all, you have to up your game at all stages. That is very critical. Now, when you get up in the morning, the energy level is higher. The sunlight is up, you're up. So coming back to the topic of waking up early. You get up early, you capture the day and move and go. The tendency is that we get up for Fajr, we pray Fajr, and we go back to sleep. Yeah. And then there's one more magic in this that I'll tell you. The average American works about 40 hours a week, right? 8 hours a day for 5 days. 40 hours a week, but the actual productive time is probably 30, 31 hours. Why? Because there's a Facebook time break, there's a LinkedIn time break, there's a chat with Wajir time break, there's a chat with Kawal break time, right? Gupshup time, chai time, and you take breaks. So you actually work 30 hours. So that if you multiply that by number of holidays and stuff, about 1,500 hours a year. Would you agree to that? About 1,560 hours a year. Now I get up at Fajr time. So if I get up at Fajr time, I've got 5, 5:30, 6 baje hoti hai Fajr. 7, 8, 9. 3 घंटे मिल गए मुझे. If you multiply 3, and I get up Saturday, Sunday भी मैं जल्दी उठूंगा. आज छुट्टी है, Memorial Day. But I got up early. In fact, I came into my hotel from my flight
at 6 o'clock in the morning, no, 4 o'clock in the morning, 6 o'clock, went to sleep for 2 hours and got up because I had to come to this. 2 घंटे सोया हूँ in about 32 hours. मेरी energy कोई कम हुई नहीं क्योंकि sunlight is supporting me. So that's the Fajr time. That's what Fajr is for. So if you multiply that, if you take that 3 hours extra I put in probably 3,000 hours a year, while most people put in 1,500. So even though you're smarter than me, you can't catch up to me. So that's the beauty of getting up early. So thank you so much. So what are the other points we would love to hear from you, that how an entrepreneur in Pakistan, they have limited infrastructure and limited what are the resources we, so how we can cope up with ourselves, and हम इस तरह का एक ऐसा माइंडसेट कैसे लाएं, या हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का वेट करें, या हम हमेशा पॉलिटिशियंस का या गवर्नमेंट का वेट करते हैं कि जी हमारे लिए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा तो हम करेंगे. सो वो जो एक स्पैन है कि हम ड्रीम करते हैं एंड देन हम एग्जीक्यूशन की तरफ प्रॉब्ली आते हैं, हाफ हार्टेडली आते हैं, किस तरह करते हैं, क्या हर्डल्स आते हैं, कहाँ ब्रेक हो जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जो है वो हम चाहते हैं कि आपसे. अच्छा, पहले हाँ, मैं एग्जाम्पल स्टोरी टेलर हो, तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि मैंने जो है ना, आपने कॉलेज में स्कूल में कहीं एक कोई अच्छी सी लड़की से बातचीत शुरू होती है, and you like her, right? And you are, let's say you are a Shia and she is a Sunni, और आपके खानदान में कभी सुन्नी से शादी नहीं करेंगे आप मुझे बताएं कि आप कोशिश करेंगे या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद नहीं है उसको ऑब्स्टिकल बनाएंगे, या you will do everything possible to convince your parents कि listen, Shias actually हमारे जैसे ही है, वो भी मुसलमान तो हैं, वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन मैं क्रिश्चियन से शादी करूंगा, और ये पढ़ी लिखी है और ये अच्छी लड़की है. You will sell yourself. You will not say यार ये तो शिया है, यार ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, चलो मैं ये आइडिया ही छोड़ देता हूँ. Think of it that way. So when you really want something, you must first want it. दूसरा आपका ये है कि at all times, at all aspects, an obstacle is just a lesson. देखिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो दो उसमें फायदे हैं, दो फायदे. एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होल्स हैं उसके लिए आप कंपनी खोल लें, क्योंकि अगर आपके लिए मुश्किल हुई है तो औरों के लिए. तो अगर फर्ज करें बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, जस्ट गिविंग एग्जांपल, राइट, तो आप क्या करेंगे, मैं कोई ऐसा सिस्टम निकालता हूँ, कंपनी खोलता हूँ, सिर्फ बैंक अकाउंट खोलूंगा कंपनीज के लिए. तो जहां ऑब्स्टिकल्स है, दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटीज आर. लुक फॉर दोस अपॉर्चुनिटीज. और दूसरा ये याद रखिएगा कि कंपटीशन जो है ना कैचअप करेगी आपको हमेशा. तो अगर आप ऑब्स्टिकल्स को हर्डल क्रॉस कर सकते हैं, जितने ऑब्स्टिकल आप खुश हो, इतना मुश्किल होगा दूसरे को फॉलो. कभी आपने कोई पिक्चर देखी हो ना जिसमें वो हीरो भाग रहा है और पीछे 3-4 गुंडे लगे हुए उनके पीछे, राइट? वो क्या करते हैं, दरवाजा बंद करता है, वो जो पत्थर पड़े वो गिरा देता है, ऑब्स्टिकल्स डालता है. तो अगर आप ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकते हैं, be happy for those obstacles because others won't be able to become you, right? That's a distinct advantage you have. Go for it. Excellent. So Zabardast, what are the other points you are actually helping us to understand कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको from ideation to dream. मैं चाहूंगा कि हमारे participants हैं, I would like to take their name as well. माशाल्लाह जी, शफात हाशमी. अस्सलाम वालेकुम शफात साहब, कैसे हैं आप? शफात साहब भी आए हुए हैं, very kind, very great person. और we have Hunain Kapadia from Smart Choice. We have Mamina Suhail. We have Shahriyar Khan. We have Shiraz. We have Usman Ali Awan, Wajiha, and Zainab Rahman, and mashallah. So let me suggest what time you want them to start interacting with you, so that मैं open करूँ इनको कि वो आपसे बातचीत भी करें. This is an open platform. We're just discussing almost like a town hall meeting. So anybody wants to raise their hand and ask a question, please. I'm honored that all these people, I love Shafat Bhai, by the way. You can't get people like him. Yeah. He's great to have him. And everybody, but I love him. And he actually believes in these principles that I
so strongly preach. He's a wonderful human. He's a wonderful human being, actually, exceptional. But anyway, let's stay on the topic of business. So I'll tell you another thing that will make you successful is pure hard work, not relaxed work. So let me give you an example. I'm working in my office and I go like this. All right, that's one way. The other thing is working on this. Let me go get the key. The energy level must be always up. And remember this, that for entrepreneurship, you must always remember that when you're an employee, you're feeding one family, your family and possibly your parents, maybe even your brothers and sisters, maybe even giving some charity. When you're an employer, you're feeding multiple families. It is bestowed upon you to do your ultimate best because those families are depending upon you. Your lack of superior performance, of excellence in everything, will deprive them their livelihood. मैं जब खाना खाता हूँ बैठ के मेज पर तो मेरे my family will tell you मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह मैं तेरा बहुत शुक्र है तूने रोजी और मैं दिल में शुक्र करता हूँ मेरे employees का जिनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता. I'm nobody without my employees. My employees literally feed me and my family. I live a dream life today. And it wouldn't be possible if I didn't have these wonderful people that give their sweat, their toil. मेहनत तो वो करते हैं. मैं सिर्फ जब ये podium पर मैं आया हूँ, मुझे तो credit मिलता है. I don't do anything. I just get the credit. They do all the work. So remember, must do hard work. और एक और चीज आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जरूर रखिएगा कि अगर आपको ये बनाना है इसको एक्सीलेंट पर करें. और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, मुझे अभी याद है. लास्ट वीक मैं बैठा हुआ था, आज की नहीं परसों, ऑरलैंडो में. तो एक साहब है, उनका बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है पाकिस्तान, बट इट्स अ मैसिव. लियाकत साहब है वहाँ. तो लियाकत साहब आए तो स्टोर में दिखा रहे थे अपना, तो वहाँ रूह से की बॉटल पड़ी थी. तो मैं रुका उनको और मैंने उनको कहा, मैंने कहा बताएं इसमें क्या लेसन मिलता है इस बॉटल से आपको ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस. तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर में, उन्होंने कुछ आंसर्स दिए. मैंने कहा मेरा ये देखता हूँ, ये रूह की बॉटल उठाई. मैंने कहा क्वेश्चनबली इफ यू टेक कोका कोला, पेप्सी एंड सम बियर कंपनीज आउट, दिस इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट सोल्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड. इंडिया भी जाती है, चाइना में भी आपको रोजा मिलेगा, आपको पाकिस्तान में तो सब जगह मिलेगा, और रमजान में प्रॉब्ली द मोस्ट लार्जेस्ट सेलिंग ड्रिंक इन द वर्ल्ड. मैं कहता हूँ पेप्सी और कोक से ज्यादा बिकती होगी. Would you tend to agree? Would you agree? बिल्कुल एग्री करता हूँ. रोजा बिकती होगी. 100 साल पुरानी कंपनी है, आई थिंक. राइट. उसका ढक्कन खोला है आपने कभी? वो पीतल का, छुरी से काटना पड़ता है. मैं गारंटी कहता हूँ कि हर इंसान जिसने रूह खोला एक दफा तो उसकी उंगली कटी और ब्लीड हुई है. कटी है, बिल्कुल ठीक है. एग्री, 100% एग्री. Would you agree that the largest company in the world has never thought of fixing it? Agree. Agree. Yeah. We as Muslim Ummah have not innovated anything. We are 1/3 or 1/5 of the population of the world. How much innovation have we done? Nothing. We make money. If this is selling, let it be. Yeah. We must innovate. If you want to be an entrepreneur, you must innovate. Silicon Valley's innovation. There's nothing else. Yeah. This glass is my own design. I innovate. This shirt has embroidery on it. It's not. I can wear a plain shirt. Why should I do it? I must do something better each day. अगर आप मुझे ये पानी मांगेंगे ये ग्लास में, मैं कहूँगा इसको बेहतर क्या करूँ? We must innovate, not copy. Copy का सवाल कॉपी में भी हम क्वालिटी बिल्कुल लास्ट हमारी एक प्रायोरिटी होती है. 100% एग्री विद यू. सर की बोतल आप देखें, किसको नहीं प्रॉब्लम है ये? वो क्या, I'm sure they live in very nice houses, हमदर्द वाले, 3 generations. I'm sure they've traveled the world. I'm sure they've seen a bottle of a syrup that opens better. Let me show you one.
Somebody gave me a gift yesterday. So participants, अगर आप इसमें कोई question करना चाह रहे हैं तो please raise your hands. I got a gift yesterday from somebody of a serum bottle. Okay. Look at the way the packing comes. Wow. Look at the beauty. Right? Excellent. Why can't we also do this? वही बोतल, वही शेप, वही लोगो, वही चीज. कुछ चेंज नहीं हुआ जी, कुछ चेंज नहीं हुआ. Agree, 100% agree. कुछ चेंज नहीं हुआ. तो यूजर एक्सपीरियंस सुपारी के पैकेट्स देखें, आप इंडियन सुपारी के पैकेट्स देखें, उनकी पैकिंग देखें. आप तो ये खोलने की चाय की पत्ती किस तरह खुलती है, वो कोई वही तरह खुल रहा, आप लड़ रहे हैं, उसे झगड़ रहे हैं, कोई सुपारी खुल नहीं रही है. आप कोई सुपारी की पैकेट वो कट एज देखी हुई है नहीं. सुपारी बहुत बिकती है पाकिस्तान में, राइट? वो छोड़, वो सेम प्रोडक्ट, यू मेकिंग मिलियंस. You probably won't even upgrade your equipment that manufactures it over 100 years. Please, let's have some questions. A lot of people are asking questions. Let's go. नहीं आपने बड़ा, yeah, please. I think we have any. Anybody have any questions? उस्मान साहब ने, अच्छा. एक चीज मैं पूछ रहा था, अभी जैसे पाकिस्तान में इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि बैन लगा है, बट अभी मैं भी थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था तो हमारे पास हार्डली कोई ऐसी लोकल मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह की कोई, स्पेशली इन फास्ट मूविंग गुड्स, एफएमसीजी है उस तरफ, या हमारी मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. हमने कोई रेप्लिकेट या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाई हैं जो कि हम सस्टेन कर सकें. हमारे सारे ज़्यादातर इवन एक घर में आने वाला आम साबुन भी जो है वो हम नहीं बना रहे हैं, बाहर से आ रहा है. तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है. हम क्यों इस तरफ नहीं देखते हैं? हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम यूज़र बने रहें, यूज़ करें चीज़ों को इंस्टेड ऑफ के हम मैन्युफैक्चर करें. अगेन मैं वही बात करूंगा कि क्या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है या वही वाली बात जो हम रोज़ा का ढक्कन नहीं चेंज कर रहे हैं. I think there's, देखिए, infrastructure is a problem. Innovation के लिए भी आपको कुछ तो cooperation चाहिए कि infrastructure back में थोड़ा सा उसको support करें. So that has to change. I think the overall, I see Pakistan as कि देखें, मैं अगर आपको अभी I don't want to take any names at all in the political system at all. It's not fair because I'm sitting outside. I don't know what really is happening in Pakistan, right? But from the outsider's point of view, if you constantly, to have democracy work, you have to allow. Kanwal Reiki, a very close friend of mine, entrepreneur, Galore, Thai, founder of Thai, very close friend, he says, you must have 5 terms to continue. Full terms. Agree. और हमें वो maturity आनी पड़ेगी कि हम let the democratic process continue for 5 terms. उससे क्या होता है, जब 5 दफा आपके electoral process चलेंगे ना, then you'll be able to differentiate के एक performance किसकी अच्छी है, किसकी बुरी है. वो कहाँ perform, जब उसको the people within get hurt or get less painful, जिसका कोई फायदा होगा आम आदमी का. हमारे unfortunately political system में चंद आदमियों को ही फायदा होता है जब चेंज होती है. तो मेरी गवर्नमेंट आ गई तो मेरे खानदान, रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों को फायदा हो गया. आप आ जाएंगे, आपके खानदान, आपके दोस्त, and this is with everyone. I'm taking all the way from Ayub's time, where Khor Ayub started, to date, and I'm taking including everybody. Everybody fighting. Now, if somebody comes and challenges the system and says, I want to run this honestly, he still has to have a whole team under him who's honest. Right? Unfortunately, and you need skill level. You must know how to run your business. मैं सिर्फ ईमानदारी से अपनी कंपनी नहीं चला सकता हूँ ना, साथ में भी थोड़ा बहुत थोड़े political sense आना चाहिए. तो that takes maturity. वो कब आएगा? जब आप electoral process को run करने देंगे. And that Pakistan needs to mature to that level. कि term 5 and आपका electoral process कितने 5 साल का होता है? 5 साल का होता है. 25 साल. You need a quarter of a century of it without being disrupted. So the people, the masses, the youth, you're fortunate. You got half the country's youth, right? ये तो बड़ी खुश है. मेरी एक वुमन नाउ टीवी पर मेरी बेटी का और मेरा इंटरव्यू है.
उसमें बेटी कहती है कि अब्बू मुझे 13 साल की, you know, my father used to make me work when I was 13 years old, didn't even pay me well. Maybe if the labor department finds it, they would arrest him. So the youth is opportunity. I wish I had 15 kids or 20 kids. मेरी तो सब कंपनियां चलाते हैं. So you have that opportunity in Pakistan. Let them fly. We're not letting them fly right now. They're going, and Pakistan will get there, by the way, because the youth will drive, they'll push the barriers, they'll make it happen, because you can't close shell and close them, right? उनको तो अपनी रोजी ढूंढनी है. वो दुनिया देख रहे हैं. It's an open world, right? It's everything is on WhatsApp, and I mean कुछ ये अभी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है. ये जब ये इंटरव्यू खत्म होगा, probably a couple of million people will see it all over, because it will happen, right? मैं forward कर दूंगा, आप forward कर दोगे इसको, फिर वो किसी को forward कर दे. So the world is very quick. So I think that's the opportunity that Pakistan is sitting on right now, the youth. And I think they're fed up with the system. So they will. So I think the democratic process is to go on. So the infrastructures will improve. Investment has to be, and the new coming governments, अभी मैं देख रहा था नवाज साहब इनकी गवर्नमेंट आई तो जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो बंद कर दिए. तो हर गवर्नमेंट अगर 5 साल में आएगी, वो कुछ प्रोग्राम करेगी 4 साल में, फिर आके वो उसको पुराने को बंद, तो मुल्क तो कभी फायदा नहीं होगा. कभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अगर आप वो उससे कोई पुल बना, चाहे वो गलत बना रहा है. वो मुझे प्रोफेसर ऑफ Berkeley Business School, Naeem Zafar, told me this last week. He said, corruption bhi hai, it's okay. Just let it happen. मैंने उनको कहा यार अभी सारे बारे करप्ट आ गए लीडर, बोलते जाने दो, करप्ट खाएगा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते जाएगा. बिल्कुल सही है, बिल्कुल बनने दो आगे बंद नहीं. हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ गए हैं. एक हुनैन कपाड़िया ने कहा है कि इन द करंट सिनेरियो did I lose him or did everybody lose him? Downturn in business and rising inflation, what is... Hello? I think I lost you, so let me, did he type the question so I can read it? In the current scenario of a downturn in business and rising inflation to founders. I think this, can you all hear me? Can somebody unmute and say if you can hear me? Because I think... Yeah, we can hear you. Yes, I think it's his internet, not mine. We can hear you. Yeah, thank you. Thank you, guys. So, Anand, a brilliant question. With inflation creates opportunity. I'll tell you what the opportunity is. So your rupee now is trading at what? What can somebody tell me what is it? Is it 200 today or 205? Yeah, 200. So the outside consumer is going to pay you at a less expensive rate today to buy your same product, right? So let's say we take labor entourage that we're exporting, which I think is the greatest opportunity for Pakistan is labor right now, right? If you can, I'm on a quest to get 100,000 Pakistani women working for me for the insurance industry in the US, 100,000. I'm working on it, inshallah ta'ala. I don't know if I'll succeed or not. That's my goal, 100,000 men, because it's a lot less expensive today. So that's the opportunity that inflation gives to founders. Inflation हो रहा है, हर चीज महंगी हो रही है, लोग आप बाहर एक्सपोर्ट आपके सस्ते हो जाएंगे ना, so export will go better. Number one. Now, what will happen? उसका प्रॉब्लम जो आपका है, जो मशीनरी आपको चाहिए, जो इक्विपमेंट वो महंगी हो गई है. Correct? That's where you approach the government and say, look, I'm going to export all this. I need some break on this. So that's equipment that I'm buying and selling out. You give me some tax break or give me some coupons. कि मैं इसको export करूँ. And I think Pakistan has done it historically. I remember in the 60s, 70s, they used to give a break on textile. कि आप export करें, आपको जो है इतना export करोगे तो इसका revenue आपको हम देंगे उसके ऊपर. So this is where the government can do really well with you. And look, what financial crisis Pakistan is going and the entire world is going is not a doing of Imran Khan. It is not a doing of the Nawaz family. It is the whole globe has gone through this COVID thing. Things have got expensive. And this Ukraine thing is going to get, oil prices are high. The export of wheat will be affected because 60% comes from Ukraine and Russia, world export, 40 to 60%. That's all stopped because America said nobody buy from Russia. That's going to cause problems. It will cause financial headaches for everybody. So I think it's something to look at. जी, हुनैन ने क्वेश्चन किया था, so he's mentioning के
in the current scenario of downturn in business and rising inflation, what is your advice to founders? So that's what I was answering. I said, look, founders, there's an opportunity there because other people also for new startups and founders can make it more sharper, more aggressively, more cost effective, and stay in that. And look, inflation always will be there. What we're going through in the US right now with interest rates rising, it's going to be very tough. Housing market will slowly slow down. Different things will happen, which will cause a rumbling effect, right? You have to be ready for it. You look at a product and opportunities that you can do in this market. Look for opportunities. Excellent. So we have another question. So based on your experience, how can insurance become a norm in Pakistan? Is it a law because of weak regulation or other factors? I think part of the insurance not exploding is because we look at insurance as a profit-making machine, not as a risk factor. What does that mean? That means हमारी जब गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है फिर हम देखते हैं कि कहीं से मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा. We don't think या हमें कोई कहता है कि आपको शेंगन कंट्रीज जाना है तो ट्रैवल इंश्योरेंस लो, right? Then you buy insurance. You never thought of it like that. मुझे आज भी आते हैं लोग कहते हैं यार कुछ मिल जाएगा उससे. अमेरिका में हम ट्रैवल इंश्योरेंस बेचते हैं. We are one of the bigger brokers in the country, and we get only calls, not even from India, not from Bangladesh, only from Pakistanis. जो आएंगे कॉल ये आएगी ज़ैन साहब यार मेरी अम्मी आई हुई है उनके लिए इंश्योरेंस नहीं ट्रैवल. अच्छा श्योर कब आई थी? वो 2 साल हो गए. मैंने कहा अच्छा तो कौन सी इंश्योरेंस पर थी? नहीं कोई नहीं लिया था. तो मैंने कहा आज क्यों ले रहे हो? नहीं कुछ नहीं ऐसे लेने ही सोच रहे लेने. और पता चलता है जैसे वो लेते हैं नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में पड़ी होती है. So we buy it because we when the need comes in. Insurance is not a charitable organization. It's a risk negating factor if you use it effectively. So the population, then there's this Islamic factor. So, a large population of Pakistanis believe that Allah subhanahu wa ta'ala does not allow you to do insurance. It's not halal. So it's a market that's challenging. So I don't know how you would go, but I think it's evolving. The companies that are coming up over time that will come up. Okay, excellent. So coming back to the topic, जो हम बात कर रहे थे कि making your dreams to the reality in terms of business and working as a Silicon Valley style. तो पाकिस्तान में हमारे पास डिफरेंट तरह के लोग हैं. अभी यूथ जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है. हमारे पास वो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी वजह से इधर या तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं या तो फिर हम जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से उसको आगे नहीं ले जा सकते. सो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट फॉर द स्टार्टअप्स और दूसरा ये कि मुझे ये बताएं कि क्या मुझे ये लगता है यहाँ पे रहते हो बिकॉज आई एम ऑन ऑल्सो विद इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई रन एन IT कंपनी एज वेल. तो हम क्या छोटा सोचते हैं फिर जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम क्या बेबी स्टेप्स को भूल जाते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो हम गलत कर रहे हैं और फिर हम बहुत जल्दी जो है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते या फेल हो जाते? I don't think you're doing anything wrong. I think a lot of fantastic opportunities coming in Pakistan, a lot of startups, great ideas. So I want to start on a positive note. Okay, Pakistan's on this rise. Political system छोड़ दें, inflation छोड़ दें, economy छोड़ दें, IMF छोड़ दें. So Pakistan will go because this youth is very excited. So I have faith in Pakistan. Where you can help yourself is founders need to understand. मैंने आपको बताया ना एक तो कि आप मैक्सिमम डिलीवरी करें. एक लाइन जो आप लिखना चाहें तो लिख लें जो भी अगर if you want to write this down. It's a line that I use all the time. It's getting viral almost, the saying of mine. Don't chase the cup, chase the finish line. और स्टार्टअप करते हैं तो ये नहीं करें कि मुझे इतना पैसा बनाना है या मुझे ये कंपनी बेचनी है या अरबपति होना है या मुझे फरारी रहनी है. आप कहें मुझे ये कप बनाना है और ऐसा कप बनाना है जो दुनिया में किसी ने कप नहीं बनाया है. Right? So, for example, Ruafza, we talked about that. Why doesn't somebody come up with another Ruafza, much more sexier bottle, better utility, and a little flavor different? It can be done. Right? So innovate, innovation, okay? Make things better. I will give one hint to all the youth
and you should do it to your children, your grandchildren, whoever. What you do is you tell them in your day when you get up in the morning and when you go to bed, look at anything that you thought, यार ये ऐसे क्यों बड़ा है, इससे तो अच्छा ये हो सकता है. That's the company. Because you thought of it, कि यार ये पानी इस तरह पी रहा हूँ, ये इस तरह क्यों पी रहा हूँ, straw से पी सकता हूँ. Then you create a straw. So if all the youth, because they're much faster, right? I don't have the energy level and the thinking speed that an 18-year-old has. Yep. And I didn't have it when I was 18 because the world was different. Now it's a lot faster and sharper, right? So what you can do is all the time train the youth under you. And if you're young, train yourself. कि मसले देखें, मसलों को ढूंढे और फिक्स करें उसको. बल्कि isn't it somewhere in the sunnah that आप रास्ते पर चल रहे हो और कुछ कचरा देखे तो उसको हटा के रख लें, सवाब मिलेगा. That is, everything in Islam is actually a magical way to train you to entrepreneurship. सुबह जल्दी उठें, योगा करें आप. नमाज is yoga, it's nothing else. अल्लाह ताला का कोई फायदा ही नहीं कि नीचे आप जाके अल्लाह ताला सजदे पर गिरता हूँ कोई फायदा. But when I touch my toes in the morning, as people do in the military, they go like this, right? Yeah. And then you stretch, right? And then you bend down. It's yoga because it's Allah Ta'ala wants to do it for you. There's no benefit of to God Himself if you read 5 times namaz, but you take a break. Punctuality, discipline, and punctuality is only part of Islam. Agree. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा. There's one time that I have dinner with my family without missing a single day. One time in the year. When is that? I don't know. All meetings, all appointments are over. I'll have dinner on the table with my family that 1 month of 30 days. Ramzan. It's only absolutely. It's only we are given all this. We're given all this massive, Zig Ziglar or Tony Robbins says these things. We've been given it. It's called the Quran. It's called the Sunnah. So, Zain, I agree. There are certain number of startups in Pakistan जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and they are very well connected with the Silicon Valley, and you know that they have the strengths to connect with the relevant investors. They have that sort of understanding and power to how to make this business pitches and documents and how to attract investors. So they have gone all this through this process. So there is a huge number of small medium companies as well, and those who are actually struggling to build their startups as well. They are from Karachi University. They are from Sakhar, Khairpur, Gujranwala, and small universities. So they don't have access to understand that mechanism, that what is happening around. They actually don't have that such capability to sort out the problems as well. So they see they want to see they want to see and get the exposure as well, as of I understand. So sitting from Silicon Valley and US, आप किस तरह देख रहे हैं इसको, because there is also a big number जो कि मैं involved हूँ with all of the incubation centers as well. तो वो जो है वो एक certain stage पे आके वो stuck हो जाते हैं, and this is a huge number. So despite of that, we have we have a couple of dozen startups. They have got a great success और उन्होंने funding भी raise की है. But I'm talking about the small medium company who are actually in service industry, and then providing IT services or maybe some other other services to a different target audience. So हमारे पास और भी चीजें हैं कि हमारे पास PayPal नहीं है, या हमारे पास और इस तरह का conducive environment नहीं है. So I'm talking about all those people who don't have that sort of exposure. तो वो क्या करें, वो अपने एक स्मॉल बिजनेस को लेके, क्योंकि वो अगेन आई एम सेइंग, मेरा वो पिछला वाला क्वेश्चन भी यही था कि वो एक तो छोटा सोचते हैं, छोटा इसलिए सोचते हैं क्योंकि कहते हैं अच्छा मैं एटलीस्ट अपने एरिया में शुरू करूं, मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स और इधर से काम शुरू करूं. दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि जी अपवर्क देख लिया या लिंक्डइन देख लिया. तो उसके लिए आप हमें को सजेस्ट करें कि ये जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये अपने आप को किस तरह नर्चर करें.
It's a very deep rooted problem. अभी मैं interviews करता हूँ पाकिस्तान में. I'm hiring, I'm going to hire a lot of people. और मुझे talent committee ढूंढता हूँ. The colleges and universities are literally publishing students without knowledge. So, our first word is read. Ikra. First word is read. Knowledge अपनी बढ़ाएं पहले तो. If you want to be an entrepreneur, be knowledgeable. You should know everything about that space you're in. So अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हुआ है, फिर आप अपना पावर एक्सलेंस सर्विस इतनी बढ़ाएं कि कोई जो चीज कोई नहीं कर रहा है वो आप उसमें ऐड कर दें. तो फर्ज करें अगर मैं ये चश्मे बेच रहा हूँ, राइट, लेट्स से आई एम सेलिंग दिस ग्लासेस, व्हाट आई विल डू इज, अब इसमें क्या इनोवेट कर सकता हूँ. मैं कहूँगा अच्छा इसकी पैकिंग में बनाता हूँ और उससे अच्छी, इसका केस बनाता हूँ, फिर मैं शिपिंग करूंगा कि मैं डिलीवर कर दूं आपके घर में. So many things you can do. देखिए, an engineering brain, a creative brain, and a marketing brain are different. So if you look at Bill Gates and Paul Allen was his other partner who just died right recently. Off the street जाए ना, लोगों को Paul Allen का नाम भी नहीं पता. Right? But he was the one who ran all the stuff. Same with Apple. Steve Jobs सब जानते हैं. Steve Wozniak को बहुत कम जानते हैं. Right? But Steve बकवास करके आ जाता था. Steve Wozniak के पास जाता बोलता यार ये बनाना है. वो कहता है भाई ये 2 दिन में नहीं बना. मैंने तो कह दिया उनको 2 दिन में बनाना है. The problem हमारी है, प्रॉब्लम यू जो है वो ये है, वो Steve Wozniak से है, वो Steve Jobs नहीं है. और वो Steve Jobs बनते हैं, and I'm not generalizing, it should not be, they exaggerate, they do this, they're not really, they don't study enough about their own space. जैसे मैं अभी कोई फंडर का बात कर रहा था, अभी there were 14 girls who came from Islamabad, and I took them out. I give classes. या सारे Silicon Valley में सब entrepreneurs open के उनसे मिले थे. I also met them. I talked to them. There are a few of them that were in that space जो उनका startup है. They didn't know global numbers on that. उनको नहीं, मैंने उनको पूछा कि अच्छा मुझे फर्ज करा अगर ये कुछ चाय का कप बना रहा है, मैं कहता अच्छा दुनिया में कितने बिकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता. आपको पता ही नहीं कितने कप बेचते हैं, आप कब बनाने चले में. So read, इकरा, read, educate yourself. अगर आप अपनी इंडस्ट्री जिसमें हैं उसमें 2 घंटे, even when you're successful, 2 से 3 घंटे हफ्ते के सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, you're losing out. I'm 60, I'll be turning 67 on 13th of June. I even today read on innovation or insurance. That is why our companies are way ahead. हम चीजें अभी हम एक चीज निकाल रहे हैं which nobody in the world has done. और मैं 67 का हूं, मुझे तो innovation आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी innovate कर रहा हूं. So to stay ahead of competition, you got to deliver better. Doesn't have to be cheaper. It's not about being cheaper. हम ये सोचते हैं कि अगर ये कप 4 रुपए का बेच रहा है, मैं 3.5 रुपए का बेच रहा हूं. That is not it. आप अगर 4.5 रुपए का कप निकाले, लेकिन ऐसा निकाले जैसे आपने अब आईफोन तो होगा, राइट, देखा ना. अब देखिए सोचे कि ये आईफोन जब उसने निकाला, he got into an industry that Sony owned, the music world. So को उठा, स्टीव कहता है यार मैं सोनी को मारेगा. सोनी was Sony at that time. सोनी उसने सोचा निकालूंगा. फिर क्या किया, आप उसका डब्बा खोले, वो डब्बे में से रूह अफ़ज़ा का कैप निकाले जिसमें तार बंधा हुआ है. Now look at the energy, रूह अफ़ज़ा कैप एंड वो तार बंधा हुआ. उसका तार खोलने वक्त मैं खोलता नहीं हूँ. उसके जो आईबड्स है ना, आईबड्स, मैं स्नैप फोन लेता हूँ, उसको स्टोर रखता हूँ. मुझे इतनी खूबसूरत वो पैकिंग लगती है, खोल नहीं सकता उसको. उसकी स्टेरोफोम जो लैपटॉप मैकबुक को आप निकाले, स्टेरोफोम जो रैप किया हुआ है, इट्स परफेक्शन. फाड़ना नहीं पड़ता है, एक लेबल से खुलता है वो नहीं खोलेगा तो क्या कंप्यूटर कम काम करेगा? सही है नहीं. Those are details. So you want to come in, और हनान के क्वेश्चन पर इनोवेशन, ये टाइम में अब ऐसी प्रोडक्ट्स निकालें which are better. बिल्कुल सही है. So हम इंटरनेशनल एक्सपोजर किस तरह लें? एक स्मॉल मीडियम कंपनी, हम लोग ज्यादातर लोकल काम करते हैं, हम ये एक्सपोजर कैसे लें? इज देयर अ मार्केट प्लेस? दूसरा ये कि ऑब्वियसली सिलिकॉन वैली एक बहुत बड़ी पावर है और वहाँ पे
दे आर हेल्पिंग ईच अदर. वहाँ पे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना इज लाइक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वहाँ पे वो कर लेते हैं. सो लोकल एंटरप्रेन्योर्स को अपार्ट फ्रॉम जो आपने चीज़ें कही कि उसको अर्ली उठना है, उसने अपने आप को चीज़ों को ठीक करना है, इनोवेशन की तरफ आना है, एंड ही मस्ट ट्राई टू बी मेक अ परफेक्ट प्रोडक्ट और उसमें जितनी क्वालिटी ऐड कर सके वो कर सके. सो what else you are saying कि जी हमें making a team and other areas और फिर getting customers, because मैंने ये भी देखा है कि जो कस्टमर की तरफ हमारी अट्रैक्शन है वो भी हमारा थोड़ा सा एज यू मेंशन कि आपने रिसर्च भी जो है वो बच्चे नहीं कर रहे हैं. सो ये वाला एरिया भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमें इसमें सजेस्ट करें कि हम दूसरी अपनी टारगेट जो इंडस्ट्रीज हैं उसको कैसे टैप करें, वो क्या वो एक्सपोजर हम किस तरह लाएं. जी जी, तो आपके 2-3 सवाल हैं इसके अंदर. तो लेट मी एड्रेस द फर्स्ट वन कि हाउ डू यू गेट इंटरनेशनल मार्केट्स. देखिए दुनिया खुल गई है. अगर आप रोज़ा की बोतल बना रहे हैं तो आप दुनिया में बहुत से लोग बना रहे हैं, राइट. तो आप उन लोगों के पास जाएं और उनको अप्रोच करें और उनसे पूछे कि आई लाइक योर आइडिया. देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड दैट आर डाइंग कि आपको हेल्प करें. वो आपसे ना पैसे लेंगे ना आपसे कुछ करेंगे, आपको टाइम देंगे, लेकिन यू हैव टू कम ऑन देयर ग्राउंड. तो आप अमेरिका में आप ढूंढें, उसको चेज करें, उसको बोले आई लाइक सम आइडियाज, आई ओपन अप दिस, आपको जवाब देगा. लिंक्डइन में जाएं, आप उससे और जगहों पर जाएं, इंडस्ट्रीज को देखिए, दुनिया अब खुल गई है ना. तो अगर जी मेरा एक और क्वेश्चन बिल्ड हो रहा है. आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मेंटोरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. फॉर इंस्टेंस अब मैंने ये भी एक बहुत बड़ा गैप में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान स्पेशली हमारे जो एसएमईज हैं या स्टार्टअप्स हैं, सो मे बी आपको लगता है कि वो लैक ऑफ मेंटोरिंग है या लैक ऑफ कोचिंग है, ये कितना इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत अच्छी बात कही, ब्रिलियंट पॉइंट. देखिए हमारे में I don't know if it's और प्लीज आप कहिएगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से लिटरली even though I come 4 दफा साल में आता हूँ, I'm not staying in Pakistan. हमारे में ये जो अकड़ है ना कि मुझे सब मालूम है, how do you fix that? तो जैन अगर बोल रहा है तो why are there only 14 people on it? Why aren't there 500 people listening? Why isn't every entrepreneur willing to get up at 10 o'clock in the night and say, यार ये बोल रहे हैं, आपने मार्केट तो क्या होगा इसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं. Did you take the time out कि यार जो मैं 50,000 बातें किए उसमें 40,999 बकवास होगी, एक तो आप सीखेंगे ना. मेंटरशिप ले ले. मेंटरशिप इज क्रिटिकल. वीसी जो अमेरिका में है वो फंड जब करते हैं, they bring in intelligence advice. यहाँ हम सोचते हैं हमें सब पता है, नहीं वो निकलना पड़ेगा. That's a mental block. और I think this is a huge difference when Pakistan split. The Gandhi approach of हाजी मैं और हम पाइप निकाला, पॉकेट स्क्वायर एडजस्ट किया, बताएं सर क्या बात है. We have to change that. We have to be humble. We have to be humble, knowing that we don't know that. बिल्कुल सही कह रहे हैं. I think the importance of mentor is far important than you get investor. So आपकी बात बिल्कुल ठीक है. So पाकिस्तान में I think ये वाला एरिया जो है आपकी डिस्कशन से ही मैंने ये निकाला, and I'm really thankful कि आपने टाइम निकाला, because आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग थी, and you are rightly on the point, because Zain अवेलेबल है, सीखने वाले पाकिस्तान में जो है बहुत कम अवेलेबल हैं. They actually need to understand कि जी टिकटॉक के बाहर भी दुनिया है, एंटरटेनमेंट के बाहर भी दुनिया है, and this is really very important, because हम ज़्यादातर अपना टाइम जो है, इवन हमारा जो इंटरनेट का जो लॉग है वो भी गूगल ने डिक्लेयर किया है, तो आपको पता है कि हमारी जितनी भी सर्च लॉग्स हैं वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के ऊपर बेस्ड हैं. एंटरटेनमेंट भी वो भी एग्री. आप उठे. अच्छा तो मैं आपको एक बताता हूँ कि इफ यू जस्ट टेक दैट 1 hour a week you spend on that and put it to research on your product, I will guarantee in 1 year your product will do better than anybody out there. Just 1 hour. क्योंकि एक साल दिन का एक घंटा आपने निकाला दिन का, right? तो 365 hours of research. Wow. I'm on the advisory board of Rand Corporation, the world's largest research company. वो 365 आवर्स की रिसर्च के आपको पैसे मिलेंगे, कुछ
$30 million वो चार्ज करेंगे, $40 million. आप तो आप सोचे आपके पास पड़ा हुआ है वो, लेकिन आप वो व्हाट्सएप, टिकटॉक उसके ऊपर लगा रहे हैं. 1 घंटा सिर्फ दिन का निकाल लें और कुछ ना करें, रिसर्च करें. और अच्छा, 1 घंटा आप डेली, 1 घंटा डेली कह रहे हैं या डेली वीकली कह रहे डेली हैं? सर, मैंने वीकली कहा डेली 1 घंटा निकाल लें. 1 घंटा क्या है, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं आप 9 घंटे कर लीजिएगा. 1 घंटे कबाब टिक्का नहीं खाइएगा रात को, राइट? सही है, दोस्तों से जरा कम मिले. चले 1 घंटा, आधा घंटा तो निकाल सकेंगे. और नहीं हो सका सैटरडे संडे को निकाल लें, 4 घंटे निकालें, बैठे रिसर्च करूंगा. जस्ट सर, शफात साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर शफात साहब डायरेक्टली ऑन स्क्रीन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है. ही इज आस्किंग कि प्लीज एडवाइज द रोल ऑफ पेरेंटिंग culture at home and education system to raise a competitive nation which may change the attitude of people and align with their aptitude in inculcating a value system which may bring integrity and responsibility at an individual and community level. Wow. Yeah. Shafat, the deep rooted problem of progress in Pakistan, you just nailed it. So Shafat bhai, phone comes, my son picks it up, okay, and he goes like this, Abbu, Shafat bhai ka call hai, kya kaho unko, aap ghar par hai nahi hai. It starts from there. It starts from there. Your child is aware of, your child knows that daddy, aapne de diya, aap कहते हो बेटा, मैंने कहा था आप ऐसे फोन कह देते हो, पूछ दो कौन है, फिर मैं कहूंगा. We inculcate in our children, in our youth, that lying is okay. Yeah. It's okay. That needs to stop first. I was watching, देखिए मैं 28 घंटे की flight, because Miami airport was closed yesterday. I was literally in a plane sitting 4 hours before I take off, 4 hours in a plane. Yet at 6 o'clock in the morning when I got up, I did my ritual of studying. I was listening to Glenn Lundy, who was a friend and a speaker. And it's got post him. I'll send it to you, and you can post it to everybody so you can see it. Okay, that, and they blacked out the words. I won't black them out. He says, you know, when your son gets up and says, "Hey, Dad, what is this shit?" Where did he get that word from? He got it from you. He got that word from you. So when you're in the room and you say to your servant, you say, "Kya kiya tumne?" But I say, by the way, this is another thing, Shafat, I'll tell you. Knocker is not a convenience. Knocker is a disaster of killing your youth. Why? If your son is not making his own bed, doesn't matter how rich you are. If he's not cleaning his own, polishing his shoes, you're destroying him. Agree. You're destroying that. If he gets up in the morning and says, "Driver, mujhe school jana hai, meri bag uthao." Oh, God damn it, what are you doing to him? और ये बहुत कॉमन है जी, क्लासरूम तक बैग छोड़ने जाते हैं जी. What are you doing to him? You're destroying your youth. Tell your son, make your own bed. Someone's not going to make it. Go get your glass of water from the fridge. How dare you tell the servant, "Pani la ke do." You're 14 years old, you're 15 years old, 18 years old. Don't you have legs? Or you running $50 million companies, sitting watching television, "Pani la ke do." And another one, in an elevator, you have a guy sitting in a chair. His whole function is to press a button because Shafat Nawab ka bacha cannot press the button. I'm 5'4". I'm 5'4". I'll probably go to the 7th level because I can't reach the top. I'll walk the rest of the stairs, but I will not tell somebody to press the button for me. Wow. We have to change that. There should be no drivers except for the disabled in Pakistan. Because you take a productive labor and make him non-productive. एक काम नौकरी नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ करेगा. और ये क्या जिल्लत है कि वो नौकर आपके साल में एक दफा 1 महीने के लिए छुट्टी जाते हैं अपने बीवी बच्चों को देखने. What? It's slavery. Wake up, Pakistan. It's slavery. Imam Bilal, he said, "Free him." And then he said, he gave him the rutba, "Jao azan do." The biggest rutba, "Jao azan do." What a rutba, right? He made him a ministry of azan, governor of azan, whatever you call him.
He taught us. So Islam is nothing but it's a social system to teach you how to live your life. नौकर से किस तरह पेश आते हो? Sorry, Shafat bhai, you hit a very sensitive tone. I'm so anti the way we bring our children up. हम झूठ बोलते हैं उनके सामने, हम रिश्वत देते हैं उनके सामने, हम लाइन के अंदर खड़े नहीं हो सकते हैं. आप जाके सिखाएं बच्चे को, नहीं बेटा मैं लाइन में खड़ा हूँ, we cannot cut this line. सर लेकिन वो हम जानते ना उसको, हम चाचा मामू को जानते ना, वो हमें लाइन में आगे कर देंगे. सर मेरा फोन का बिल तो आपको मैं एक real case, one of the largest shareholders of massive shareholders sitting on the board of PCL is named Zamindar, my partner. Okay. We're trying to set up a company. We need something done in PCTL. But she is on here, she'll tell you, we're not going through name to do it. We'll do it ourselves. I will not take the shortcut. Excellent, Janab, excellent. So Zain, thank you so much for your time. ये series जो Road to Innovation है, ये हम आपके साथ every month इंशाल्लाह करेंगे. There is a lot to discuss with you. There's a lot to talk with you, and there's a lot to learn from you. You are actually at university, और इंशाल्लाह हम different topics पे बात करेंगे. We have a separate session with Shafat as well, because Shafat के साथ जब मैं मिला, so I identified कि जी he's a very great soul, mashallah. और I'm thankful to you that you have connected me to him. And मैं लाहौर जब भी जाता हूँ उनसे मुलाकात जरूर करता हूँ. He's a very lovely person. He's a gem of a human being. He's a gem of a human being. Exactly. So Zain, thank you so much for your time, and thank you so much for your insightful discussion. I'm grateful, and I'm grateful that I have actually personally moderated this session, and I've personally learned a lot. So आपका time हम इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे. Next month जो है आपके साथ एक और session with another good topic with you. And I am expecting that 14-15 participants की जगह हमारे पास 140-150 participants हो, और हम इंशाल्लाह ज़्यादा आपसे जो है वो learn करें. और ये एक discussion है, और जिससे जो है वो जितना भी लोग सीखना चाहें उतना कम है जी. So thank you so much for your time. I'm really honored. Thank you so much, and I really appreciate it. Thank you for giving me this honor. Thank you everybody who stayed on this listening to my bullshit. Thank you very much, and inshallah ta'ala we'll connect. Everybody in the group, please invite 10 young people that are struggling in their businesses on the next one. If we have to massively start learning in this country and reach out. Thank you again. I want to apologize if I've said anything to upset anyone. There's no, I'm very clean at heart. I love you all. If I said anything to upset anyone, मैं माफी चाहता हूँ. मुझे माफ कीजिएगा, and have a great month, inshallah ta'ala. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Allah Hafiz.